Assalamu alaikum, welcome to yet another episode of The Art of Investing with Naeem Khiyani. Thank you so very much आपके जितने एपिसोड्स अभी हम कर रहे हैं उनको पसंद करने का, जो नया फॉर्मेट जो हमने शुरू किया है उसको आपने काफ़ी पसंद किया, सो थैंक यू सो वेरी मच। आज हम उसी फॉर्मेट पे रहेंगे। आज S&P जो यूएस की S&P इंडेक्स और नेस्डैक के ऊपर बात करेंगे कि वो आज डाउन हुई हैं। S&P थोड़ी सी अप हुई है लेकिन नेस्डैक और डाउ डाउन हुई है, और TSX जो है वो अराउंड टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज कोई 150 पॉइंट जो है डाउन हुई है। अच्छा, क्यों हुई है ये हम बात करेंगे। बेल ने अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ले ऑफ किए हैं, उसके बारे में बात करेंगे और बेल के स्टॉक के बारे में देखेंगे। ऑन द अदर हैंड कुछ स्टॉक टिकर्स इंशाल्लाह आज आपके लिए मैं लाया हूँ, तो उसके बारे में बात करेंगे। और बेल के अलावा बहुत सारी दूसरी कंपनीज हैं वो भी इस वक्त ले ऑफ प्लान कर रही हैं या कर रही हैं, तो विल टॉक अबाउट दोज कंपनीज एज वेल। इन कंपनीज से जो डिस्कस करने का सिर्फ फ़ायदा ये होता है जब जो कंपनीज हमें पता है कि ले ऑफ प्लान कर रही हैं, जब ले ऑफ होता है तो इन्वेस्टर की जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो शेक होता है, और जिसकी वजह से इन्वेस्टर ट्राई करता है कि उस जगह से बाहर आ जाए। जब बहुत सारे इन्वेस्टर्स बाहर आना शुरू करते हैं तो स्टॉक की प्राइस जो है थोड़ी सी फ्लक्चुएट होती है, नीचे जाती है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग विद नईम खियानी। अच्छा जी, वीकली बिजनेस इम्पैक्ट आज का दिन जो इस वीक में क्या हुआ है। TSX 141 पॉइंट्स डाउन हुई है। यूएस में नैस्डैक जो है वो भी डाउन हुआ है 1.1%। S&P शुरू में सुबह में डाउन था लेकिन अब वो जो है वो उसने टेक ओवर कर लिया है, दे आर बैक टू नॉर्मल नाउ। और डाउ जोन्स जो है दे आर 117 पॉइंट्स डाउन एज वेल। सो क्यों हुआ ये सारा, तो लेट्स डिस्कस दैट। अच्छा, पहले हम बात करेंगे बेल की। बेल ने आज 9% ऑफ इट्स वर्कफोर्स को जो है वो निकाला है, मतलब जो है ले ऑफ किया है। और अगर उनकी सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनके रेडियो स्टेशंस, इनके डिफरेंट जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसमें काफ़ी इम्पैक्ट आया बेल की तरफ से। अब प्रोजेक्ट्स बेल के काफ़ी हैं, एक तो बहुत ही जो है वो पुरानी कंपनी है और उसके हिसाब से जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो भी काफ़ी हैं। अब क्योंकि टेली कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सी चीज़ें जो है वो एडवांस हो रही हैं, सो बेल इज़ ट्राइंग टू मेक दोस एडवांसमेंट एज वेल, बट ऑन द अदर साइड they have Rogers who is taking all the competition right there, which is why Bell is taking a bit hit on that way. स्टॉक देखते हैं बेल का कि क्या हुआ बेल के स्टॉक के साथ। आप नोट करेंगे कि बेल के स्टॉक ने नोज डाइव किया है आज, और वो इस तरह की जो कंपनीज होती हैं, इस तरह के स्टॉक्स होते हैं, वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ के लिए ये काफ़ी बेहतर होते हैं, क्योंकि जब कंपनीज इस लेवल पे आती हैं कि नाउ दे आर अर्जिंग फॉर इट, दैट इज़ द टाइम टू बाय एंड दैट इज़ द टाइम टू गेट इट। सो लेट्स व्यू जो है वो बेल का स्टॉक। तो ये है बेल का स्टॉक, जो टिकर है वो है BCE। अगर आप ये देखें, एनालिस्ट कह रहे हैं इसको होल्ड करो, अगर आपने लिया हुआ है तो भाई होल्ड करो, डोंट डू एनीथिंग राइट नाउ। अर्निंग्स इन्होंने बीट किया है, सरप्राइज दिया है 4%, लेकिन ऑन द अदर साइड क्योंकि आज ये न्यूज़ आई है दैट दे हैव लेड ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, विच इज़ वाई इफ़ यू सी द कर्व, ये 2 फेब को इनका था, 5 फेब को इनका स्टॉक था 52.82, थोड़ा सा बढ़ा 6 फेब को, एंड टुडे इट वेंट डाउन कंप्लीटली। दे आर इन द ऑन द नोज डाइव 51.08 पे आज इनका टिकर बंद हुआ है। अब फ्राइडे को या जो नेक्स्ट डे है उसमें कैसे वो चलता है स्टॉक, विल लुक इनटू दैट, बट एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर द गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू लुक इनटू, क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशन किसी कंपनी के साथ होती है तो दे आर ट्राइंग टू गेट मोर इन्वेस्टमेंट अंडर देयर बेल्ट, और इनकी से इन्वेस्टमेंट काफ़ी जो जाना शुरू हो जाती है, तो दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी टू लुक इनटू। अगर इसको आप एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेल का जो स्टॉक की जो टारगेट प्राइस है दैट इज़ 57.51। डिविडेंड इनका अच्छा है 7.52%, तो अगर आप डिविडेंड स्टॉक में बेल को देखना चाह रहे हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू डू दैट। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको इस स्टॉक को में जो है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है तो थोड़ा सा वेट करें, ये 49-48 तक अगर आए तो देन गेट इट, बिकॉज यू कैन गेट और गेट मोर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन दैट वे। वैसे अगर अभी तो इसकी एनालिसिस की प्रेडिक्शन होल्ड है, लेकिन जब ये थोड़ा सा ऊपर आना शुरू करेगा तो ये माइट बी इट गोज बिटवीन 60 एंड 65 इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। और अर्निंग जो उनकी रिपोर्ट हुई है 8 फरवरी को, इनकी जो रिपोर्टेड EPS है विच इज़ अर्निंग पर शेयर दैट इज़ 0.76,
और जो सरप्राइज है इन्होंने 4% ज़्यादा जो है वो अपनी अर्निंग्स शो की है, विच इज़ गुड फ्रॉम बेल परस्पेक्टिव, बट ड्यू टू दैट न्यूज़ which is why these investors are not getting a lot of confidence and they're getting out. Coming back to the presentation, जैसे बेल कनाडा के ले ऑफ के बारे में हमने बात की, there are many other companies who are laying off their employees as well. And as I said, same formula, क्योंकि अगर कंपनीज ले ऑफ करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को तो इन्वेस्टर्स की जो कॉन्फिडेंस लेवल है दैट शेकन अप. सो लुक इनटू दोज कंपनीज व्हिच आई एम गोना शो यू राइट नाउ. बेंच एससीआई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है. ये अपने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो वर्क फॉर जनवरी में बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट दे आर लेइंग ऑफ एज वेल. एम्ब्रिज ले ऑफ कर रहा है अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को और अराउंड 650 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इम्पैक्ट होंगे इससे, और ड्यू टू विच, और ये फरवरी में ये कर रहे हैं ड्यू टू इंक्रीजिंग चैलेंजिंग बिजनेस कंडीशंस. दैट्स द वर्ड दे यूज्ड. बट ऑन द अदर साइड जिस तरीके से बेल 7.5% आपको डिविडेंड देता है, एम्ब्रिज भी अराउंड इतना ही परसेंट देता है. एक इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास 3-4 बकेट होने चाहिए. एक आपके पास डिविडेंड स्टॉक का बकेट भी होना चाहिए. उससे फायदा ये होता है कि जितना आप उस डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे यू विल गेट मोर डिविडेंड बेस्ड ऑन द परसेंटेज दे ऑफर. 7.5% या 8% तो इस वक्त बैंक या कोई और भी ऑफर नहीं करता अगर वहां पर से पैसे डाल रहे हैं. लेकिन दीज आर द कंपनीज विच ऑफर एंड दे आर वेरी ओल्ड कंपनीज और वेरी ओल्ड कैनेडियन कंपनीज आई वुड से. सो अगर आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, सो डोंट थिंक ऑफ देयर प्राइस फ्लक्चुएट, think of their dividend which they are giving it out to you, क्योंकि that is your retirement income. That's how I would see it. क्योंकि जब dividend income आपकी dividend ज़्यादा होता है, जितना आप उसमें invest करेंगे you will get more benefit और you can save up to more retirement plan as well. ये हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं अपने पुराने प्रोग्राम्स में, but think of these as in this way, in this strategy as well. By the way, मैं disclaimer बताना भूल गया आपको कि whatever we are saying is part of the education. Do your own due diligence before you jump into any stock or before you buy or before you sell anything. Okay जी, Google जो है Alphabet, they are laying off a lot of their staff और hundreds of employees जो हमें न्यूज़ में पता चला है कि they are getting laid off. Indigo is laying off unspecified number of staff in January. So January में कुछ lay off हो रहे हैं, कुछ February में हो रहे हैं. लेकिन Indigo इस वक्त एक ऐसा जो है वो business impact बना हुआ है यहाँ पे कि they cannot get out and they cannot get in, क्योंकि Indigo का competition इस वक्त बहुत सारी companies है जो online आपको वही product sell करती हैं जो Indigo दे रहा होता है, right? तो उसके लिए brick and mortar create करना, उसके लिए वहाँ पे बैठना, it doesn't make any sense, right, from company's perspective. So Indigo को आप देखते रहें, लेकिन अगर आपके पास Indigo के stock है तो I would say कि you can get out of that because it's not gonna last very long, not for 4 or 5 years or so. That's what I would say. Mastermind Toys are also laying off their employees, around 272. Mastermind Toys again, they are getting a lot of hit from Amazon and from other online digital media as well, due to which they are getting hit because jahan brick and mortar after COVID, there are a lot of things which has been changed. So if you are owning a store and if you are staying in the store, if you are paying the maintenance and expenses of the store, while on the other side you have digital media, you have digital way of handling your things and shipping it out, that's a huge margin which the other side is saving. So that is the one thing to watch out for. Rona, आपने नोट किया होगा कि रोना इस वक्त वो सारे स्टोर्स ले रहा है यहाँ पे जो लोस था यहाँ पर. So Rona is getting hit on that front as well because of Canadian companies. The company, they bought a lot of inventory and infrastructure with Lowe's as put together here. So Rona is laying off 300 jobs as well, along with Staples. Staples is also laying off their workers, unspecified number of workers. That's what is being told in the news. लेकिन कितने होंगे? Don't know. Wayfair, US home goods retailer, they are also laying off 50 workers in Ontario. और जनवरी में जो अभी आप जो देख रहे हैं उनमें कुछ इनके एग्जीक्यूशन जनवरी में हो चुकी है और कुछ एग्जीक्यूशन फरवरी में होने वाली है. So make a list of these companies because they will be benefit for you in order for you to, if you would like to invest in these. But again, do your due diligence before you jump in.
अच्छा जी, नेक्स्ट हम जाते हैं यूएस मार्केट की तरफ। तो नैस्डैक डाउन, एस&पी बराबर हो गया है, डाउ जोन्स डाउन। क्यों हुए? लेट्स गेट इनटू इट। पहले हम बात करते हैं जेपी मॉर्गन, जो एक बहुत बड़ी फर्म है ऑडिट की। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि देयर विल अनलेस देयर इज अ रिसेशन द यूएस इन्फ्लेशन रेट विल नॉट रीच 2%। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है क्योंकि यूएस का जो रिसेशन है वो ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं है, बट इट इज देयर एंड वी आर सीइंग दैट थिंग। सो अगर इन्फ्लेशन रेट जो है 2% नहीं रीच करेगा तो यू विल सी द रिसेशन कमिंग इन। इन फैक्ट इट इज, एज आई सेड, इट इज देयर, बट इट इज बीन अनाउंस ऑफिशियली एज वी गो। डिज्नी, वॉल्ट डिज्नी का जो Q1 का जो रेवेन्यू है वो आया है अच्छा, 23.5 बिलियन इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, और एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन थी 23.8, विच इज नॉट बैड। अर्निंग्स पर शेयर इनके $22 है, विच मीन्स एक शेयर के ऊपर ये $120 कमाते हैं, और फोरकास्ट थी 0.99 cents, so which is better in that way. Dividends increased by 50% to 45 cents per share, which is not bad at all. पहले मैं दो तीन पढ़ लूँ, उसके बाद आपको डिज्नी और होंडा मोटर्स का स्टॉक भी दिखाऊंगा। होंडा मोटर्स के Q3 सेल्स के नेट रेवेन्यू आया है 5.39 ट्रिलियन येन, क्योंकि वो जापानीज कंपनी है, सो दैट्स हाउ दे प्रोवाइड दैट। फोरकास्ट इनका था 5.3, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप ये देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका है 37.81 बिलियन, विच इज वे लो than what they are reporting. So they are in huge profit in that way. PayPal का अगेन Q4 का नेट रेवेन्यू 8.026 बिलियन आया है, जो 9% ईयर ओवर ईयर ऊपर जा रहा है, विच इज गुड फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। बट लास्ट वीक हमने पेपाल के बारे में भी बात की थी कि दे आर लेइंग ऑफ देयर एम्प्लॉयज एज वेल। कोटी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और इनका भी रेवेन्यू 13% इंक्रीज हुआ है, 1.73 बिलियन इन्होंने रिपोर्ट किया है अपने Q2 में। मेटल, टॉय मैन्युफैक्चर, मेटल को अगर आप एज अ कंपनी नहीं जानते तो जितनी इस वक्त मूवीज आ रही हैं वॉल्ट डिज्नी की तरफ से, बारबी और वो सारे जो टॉयज हैं वो मेटल जो है प्रोड्यूस करता है और मैन्युफैक्चर करता है। तो इनका Q4 रेवेन्यू भी ज़्यादा है, इट्स लाइक 1.62 बिलियन, विच इज 16% इंक्रीज्ड। Wayne Resort, it's a 5 to 7 star resort in all over US or outside of US as well. इनका revenue increase हुआ है 83%, which is way too much, and which is good on that side. अगर आप इनका earnings per share देखें तो this is $91 versus $15. So technically they are reaching towards $2, which is much more good on their side. और अगले 5-6 सालों में, क्योंकि हमने, आपको याद होगा कि कुछ प्रोग्राम्स पहले हमने जिक्र किया था कि ट्रैवल और रिजॉर्ट इंडस्ट्री इज बूमिंग, एंड दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स व्हिच वी आर सीइंग देयर, दैट दे आर बूमिंग। ट्रैवल जो है हर कोई कर रहा है, रिसोर्ट हर कोई यूज कर रहा है, वेकेशंस प्लान हो रही हैं, विच इज व्हाई these industries are booming as well, and you'll see 83% increase in their revenue. Okay, let's see Disney and Honda motor stock. इस वक्त वॉल्ट डिज्नी का स्टॉक है 110, बाय द वे इट्स इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, तो ये USD में है। आप यहाँ देखें, बेस्ड ऑन जो इनकी अर्निंग्स रिपोर्ट हुई हैं, द स्टॉक वेंट अप बाय $11। ये आप देखें कि ये ऊपर गया 99 से ऑलमोस्ट 110। एनालिस्ट की प्रिडिक्शन थी 108 होगा, बट दे आर गोइंग प्रीटी वेल एज पर एनालिस्ट प्रिडिक्शन। Earnings per share is 1.29 or PE ratio 60, which is much higher. So you can look into that stock, but I would not suggest to buy right now. Just wait, क्योंकि एक तो ये स्टॉक, एक तो ये प्राइस थोड़ी सी महंगी है उस हिसाब से, क्योंकि इनका अर्निंग्स रिपोर्ट भी which is why they are there. और दूसरा जो एनालिस्ट की प्रिडिक्शन है वो इनका जो वैल्यू है that is 108, but it is 110 right now. So wait for a couple of at least a week to see how exactly this stock perform, and then if you would like to jump in. Walt Disney, क्योंकि बड़ी कंपनी है, इनका जो मार्केट कैप है that is almost 200 billion, तो कहीं जाती नहीं है, it's not going to go anywhere, but look into that, right, before you jump in.
अच्छा, then we'll look at Honda Motors. Honda Motors, here we go. अच्छा, Honda Motors का स्टॉक है इस वक्त 35.17. ये आप देखें, it is going up as well, based on जो उनकी earnings report हुई हैं. EPS इनका 3.77, earnings per share is 3.77, PE ratio 4.52. This is good. So these are the stock. ये जानदार स्टॉक है क्योंकि आप जो है PE रेशो क्लोजर है स्टॉक के उससे, और अर्निंग्स पर शेयर जो है वो भी अच्छी है. इनका रेवेन्यू जो हमने देखा वो भी अच्छा है. मार्केट कैप आप देखें 62.83 बिलियन इनका मार्केट कैप है, और इनकी अर्निंग्स 651 बिलियन इनकी अर्निंग्स रिपोर्ट हुई. हमने येन में बात की थी, बट दैट्स हाउ इट इज. और एनालिस्ट की इस वक्त जो रिकमेंडेशन है बाय की, इनके अर्निंग्स रिपोर्ट होंगी नेक्स्ट 9 मई 2024 को, और बेस्ड ऑन अगर ये लोग सब सही रहे और प्रिडिक्शन सही रही, सो दे माइट गो अप टू अराउंड $40 एज वेल. आप इस तरह के स्टॉक को एक्सपेक्ट ना करें कि ये 100% ऊपर जाएंगे. अगर आपको इन स्टॉक्स में 10% या 15% जंप मिलता है, दीज आर द वंस टू बाय एंड गेट इन फॉर, राइट. आप कुछ स्टॉक्स की कैटेगरीज होती हैं जिसमें आपको 100% मिलता है, कुछ स्टॉक की कैटेगरीज होती हैं जिसमें आपको 10-15% से ज़्यादा नहीं मिलेगा. So as long as you are on the profit side, that's what it matters. All right, so let's get back to the presentation. All right, so आज के दो टिकर जो हम आपके सामने लाए हैं, the first one is Shopify. Again, I'll use the disclaimer again, और मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूँगा कि वो disclaimer की यहाँ पे स्क्रीन भी डाल दें, that we are just giving you this information based on our research, based on जो analyst की research होती हैं on the website. We are not giving you any recommendation. If you would like to get into this stock or buy one, you have to do your due diligence before you jump in. We are only providing you the education so that you can get enough information before you make a call. Okay, Shopify, everybody knows, online shopping cart, online shopping experience, और आप अपना खुद का e-commerce platform इसमें बना सकते हैं. Mid size to small business के लिए ये perfect solution है, but there are other means or other solutions as well, due to which Shopify is getting ahead. Shopify की reports earning होने वाली हैं February 13th को, और prediction analyst की है कि अगर आपने Shopify का stock अपने पास रखा हुआ है तो start selling the stock, क्योंकि अभी इनकी price जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, but on the other side, and the prediction is their price will go down at around $80. Let me show you the Shopify stock. So this is Shopify. इस वक्त Shopify ऊपर जा रहा है, which is good, क्योंकि investors की जो confidence है वो काफ़ी है इस stock में. 118 इस वक्त इसका price है. आज इनका जो डॉलर चेंज आया, that is 3.54, almost $3.5 ये ऊपर गए हैं, लेकिन एनालिस्ट की प्रेडिक्शन के हिसाब से ये 77 होना चाहिए, क्योंकि ये इट्स वे मोर देन व्हाट इट शुड बी. अर्निंग्स पर शेयर इनकी आप देखें तो -0.91, विच मीन्स ये कुछ नहीं कमा रहे अपने स्टॉक से, राइट. अपने शेयर्स जो उनके मार्केट में, दे आर नॉट मेकिंग एनी मनी, दे आर इनफैक्ट लूजिंग अराउंड 9 cents देयर पर शेयर. सो अगर 118.23 इसमें 9 cents अगर ये लूज कर रहे हैं तो इट्स नॉट गोना वर्थ इट. ऑन द अदर साइड, अर्निंग्स जो इनकी लास्ट टाइम रिपोर्ट हुई थी, दोज वर इन नेगेटिव, सो दैट्स -3.46 बिलियन, और मार्केट कैप इनका 109 है, विच इज़ नॉट दैट गुड, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे दूसरे जो भी हैं, जैसे ईबे है, पेपाल है, बाबा है, अली बाबा, सो देयर आर लॉट ऑफ अदर competitor in the market. As I said, earnings इनकी रिपोर्ट होने वाली हैं 13 Feb 2024. Consensus earnings per share forecast ये है कि इनका 14 cents इनका EPS आएगा, लेकिन पता नहीं, right? It depends. So अगर इनका EPS 14 cents नहीं आएगा तो जो बेस्ट इस वक्त डिसीजन और रिकमेंडेशन है कि इफ़ यू हैव दिस स्टॉक, अगर आपने प्रॉफिट कमा लिया इसमें तो इसमें सभी बाहर आ जाएं, वेट करें जब तक अर्निंग आती है, देन यू कैन गेट बैक. So that's that. Let's get back to the, before we get back to the presentation, I would like to just show you one more stock. हमने LCCN के बारे में बात की थी. हमने कहा था कि LCCN जो है वो
इट्स गेटिंग बेटर, दे आर गेटिंग इनटू इट. आज इसका स्टॉक नीचे आया है 1.59. ये काफ़ी बेहतर होने वाला है ड्यू टू कि इनको कुछ प्रोजेक्ट्स मिले हैं दुबई में. ये लीप चार्जर जो है ये ईवी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, दे मेक चार्जिंग स्टेशंस. तो इनको दुबई में यूएई में इनको प्रोजेक्ट्स मिले हैं 2 या 3, एंड दे आर डूइंग मल्टीपल बिल्डिंग्स देयर. सो दे गॉट वेरी गुड प्रोजेक्ट्स देयर. ये अंडर वैल्यूड है इस वक्त अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ एनालिस्ट. एज आई सेड ईपीएस इस वक्त नेगेटिव 3.64 है. इस किस्म की प्राइस में अगर ये वाले जो स्टॉक, इस तरह के स्टॉक होते हैं जिनमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये 100% जाएंगे, क्योंकि 159 का स्टॉक है, अराउंड जो है 160-170 तक का हो जाएगा. अगर आप ये अभी खरीद भी लेते हैं और ये $3 या $4 का भी होता है तो यू आर अर्निंग 100% प्रॉफिट राइट देयर. सो यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दीज वंस. So look into that, and again these are only suggestions. It's up to you if you would like to buy these ones. So let's get back to the presentation. और आज का आखिरी स्टॉक है Saputo. आप सब इस कंपनी की प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे. They sells cheese, cream, fluid milk and other dairy products. अगर आप ग्रोसरी स्टोर में जा रहे हैं और आप दूध का एक कैन ले रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम Saputo. और दे मेक अ लॉट ऑफ अदर डेयरी प्रोडक्ट्स एज वेल. आपने सारी इनकी प्रोडक्ट्स यूज़ की होंगी फॉर श्योर. रीज़न आई एम ब्रिंगिंग दिस स्टॉक टुडे इज़ इनका अर्निंग्स जो हैं वो आने वाली हैं, और अच्छी जो एनालिस्ट की प्रेडिक्शन है कि अच्छी अर्निंग्स आने वाली हैं, ड्यू टू विच दिस इज़ अ स्टॉक विच यू कैन लुक इनटू. प्राइस टू एंटर, अगर आप की अफोर्डेबिलिटी है अराउंड 28-27 का स्टॉक है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको. अगर अफोर्डेबिलिटी है प्लीज़ जंप इन. और उसके बाद प्राइस टू एग्जिट अराउंड $33. इसके ऊपर ये जो है वो हो सकता है ना जाए, लेकिन 28 to 33 इस रेंज में ये होगा. So if you would like to jump in, if you like to get out, you can. So let me show you the ticker details. All right, so this is the ticker detail for Saputo. इस वक्त Saputo है जो closing आज हुई है, that is 27.95. Canadian Toronto Stock Exchange में listed है ये, और Shopify भी जो मैंने आपको दिखाया that was from TCX as well. एवरेज को अगर आप देखें तो ये इस वक्त स्टॉक इनका एवरेज से बेहतर चल रहा है, विच इज़ अराउंड 27.9. एवरेज इनकी है 28, एवरेज इनकी है इस वक्त 27.9, और एवरेज इनकी जो है वो इस तरह से चल रही है अराउंड 26. एंड ऑल्सो एनालिस्ट की जो इस वक्त प्रिडिक्शन है दैट इज़ बाय. अगर आप ख़रीद सकते हैं, एज आई मेंशन, डू लुक इनटू दिस. एनालिस्ट की जो प्रिडिक्शन है दैट विल गो अप टू 32.5 Canadian. It might go up based on their earnings which are going to be reported. और EPS इनका $1.51 है, और PE थोड़ा सा ज़्यादा है 18.71. बट एज आई सेड, बेस्ड ऑन अगर आपको आपकी जो है वो एग्जिट पता है कि इस प्राइस पे आपको एग्जिट होना है, और बाय दैट टाइम अगर उसका क्लोज भी आता है, तो इफ़ यू आर एग्जिटिंग एंड यू आर मेकिंग प्रॉफिट, दैट्स हाउ इट मैटर्स. So this is it folks, thank you so very much आज का प्रोग्राम देखने का. और एज आई मेंशन, आप अपनी स्ट्रैटेजी, हर इन्वेस्टर को अपनी एक स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी चाहिए. कुछ लोग जो है वो काफ़ी डिफेंसिव होते हैं, विच मीन्स कि वो कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादातर डिविडेंड स्टॉक पे खेलें. कुछ लोग ज़रा एग्रेसिव होते हैं, वो थोड़े से रिस्क भी ले सकते हैं बेस्ड ऑन के किस तरीके से मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है. डू स्टडी अ लॉट, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई चीज़ चेंज हो रही होती है. जैसे आज हमने बेल का देखा, टेली कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आया होगा, तो वो आपको ऑलमोस्ट एवरी डे, इफ़ यू आर इन्वॉल्व, इफ़ यू आर रीडिंग और लिसनिंग बिजनेस न्यूज़, दैट विल गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन. और हम तो हर वीक आपके लिए आते ही हैं टू प्रोवाइड यू ऑल द डिटेल्स देयर. सो थैंक यू सो वेरी मच. एज आई मेंशन, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में, कि स्टार्ट फाइंडिंग एंड कीप मेकिंग मनी. अस्सलाम वालेकुम.